here today we will walk you through the HDFC Sky products, pricing and features. Also, we will give you a basic understanding about equity delivery, what is margin trading funding, futures and options, and also about HDFC security research. So today's webinar would talk about all the basics, and all the pricing features which is offered by HDFC Sky. So let's get started. This is a generic disclaimer. I would like to read it out here. The content and explanation shared in the webinar are only for information and educational purpose. Stock market trading and investments are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making financial decisions. So to start with, let's start with Sky pricing. Okay, first of all, whenever you open the account in HDFC Sky, so जब भी आप account open करोगे, तो there are no account opening charges. All right, account opening बिल्कुल free है. And talking about delivery and intraday, so अगर आप delivery में कोई trade करते हो, for example आज आप आपने कोई एक stock आज buy किया, and if you hold it for more than 1 day, so it will be considered as delivery. So वहाँ पे आपको 20 rupees per order ये इतना brokerage लगेगा. Also, if you're making trade in intraday, that is you're buying and selling the shares on the same day, then आपको 20 rupees per order same brokerage लगने वाला है वहाँ पे. And talking about derivative broking, अगर आप futures and options में trade करते हो, and that is index options or stock options or stock futures or options for that matter. So आपको सेम 20 rupees पर ऑर्डर वहाँ पे डिलीवरी वहाँ पे पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज होगा. ओके, बेस्ट पार्ट अबाउट HDFC Sky is that we do not charge any brokerage on ETFs. So if you're buying any ETFs, okay, on HDFC Sky app, so there is no brokerage charged on ETF. Okay, so that's a very unique offering what we give to our customers. Okay, talking about currency, if you placed any order in currency or commodities, okay, if you're placing any order there, so similar to delivery and intraday, you get charged 20 rupees per order. All right. First year AMC is free. Okay, after that there is 20 rupees per month, that is annual maintenance charges which is charged on your demat account, and that is a 20 rupees plus GST. GST is charged different. Call and trade charges. Okay, call and trade charges is nothing but अगर आपको कोई trade place करना है, हमारे पास एक कस्टमर सपोर्ट टीम है जिसपे आप सिंपली कॉल कर सकते हो और आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो. Okay, if you're finding any difficulty in placing the trade on the app or for that matter on the website, so आप simply call करके हमारे customer care executive को बोल सकते हो कि you want to place an order in XYZ stock. Okay, your request will be accepted there. However, there would be 20 rupees per call charges applied for whatever execution is done. Coming to demat transaction charges, so again that is 20 rupees which is charged. Okay, and also we have MTF, that is margin trading facility, which is also called as buy stocks and pay later. We are very competitive in terms of pricing and interest rate here. So if you see, MTF is at 12% per annum. If you go in industry, आप अगर industry में check करोगे, other brokers they charge you 18% or 20% or for that matter 15%. But if you check with HDFC Sky, so we are offering MTF at 12%. Okay, that's a very competitive pricing what we are offering as of today. Coming next to derivative segment activation process. So you all know, or for that matter, I would like to tell you that अगर आपको कोई derivative segment में, for that matter futures options में, आपको trade place करना है,
So it is important कि आप आपका derivative segment activate करें. Without activating the derivative segment, आप आपका order place नहीं कर सकते हो. So to activate your derivative segment, it is a very simple process on the HDFC Sky app. Okay, if you open the app, on the left hand side आपको एक hamburger दिखेगा. आप अगर वो hamburger पे click करोगे और उसके बाद आपको एक option आएगा under the account section, that is profile settings. Profile settings में click करने के बाद you will be clicking on active segments. एक tab होगा which will be as active segment. Now since आपका अगर segment activate नहीं है तो by default यहाँ पे cash ऐसे mention होगा because obviously अगर आपका segment activate नहीं है तो आप cash segment that is आप delivery कर ही सकते हो. ठीक है. Once you click on cash, अगर आप एक बार cash पे click करोगे so automatically it will take you to a new page, okay, wherein it will ask you to verify your bank statement via OTP. If you look at other brokers and their processes, so उसमें क्या होता है कि segment activate करने के लिए you have to upload your salary slips and idea statement. Yes, we have an option here as well, okay, but this is a simplified option what we have here, that is bank statement via OTP. So आप simply उस पे click करके if you do next, I will show you a small video how quick the process is. कितने कम time में आपका segment the entire process will get completed, and I will let you know कि how much time it will take to activate your segment. So would like to bring to your notice that if you have this particular bank accounts, ये हमारा account aggregator है जिससे हमारा ऐप है. तो अगर आपके ये बैंक अकाउंट्स है तो आप सिंपली ये प्रोसेस कर सकते हो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द डेरिवेटिव सेगमेंट. ठीक है, आई विल प्ले अ स्मॉल वीडियो. इस वीडियो में यू विल बी एबल टू सी that how the entire process works to activate your segment. Okay, it's not at all tedious, it's very simple, so and it's very easy to understand. So I'm just playing this video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. All right, so आपने देखा it is a very simple process जिसमें you just have to enter your OTP and you just have to give your consent so that it can scrutinize your bank statement and automatically your request will be accepted. Once your request is accepted, it takes 24 to 48 hours for your up to 24 to 48 hours for your segment to get activated. एक बार आपका segment activate हो गया, then you can place trades in FNO segment. Okay, so it's a very simplified process here. Okay, if you don't want to go via this process, there's another process wherein you have to just upload your idea statement or salary slip, and again that again it will take the same time for you to do the process. So yes, but this is a very simplified process. वहाँ पे you have to be handy with all the documents.
for example, idea statement, or for that matter, you have to be handy with your salary slips. So yeah, to avoid that, we have introduced this process. So coming next to DDPI activation. So what is DDPI activation? Basically, it's nothing but demat, debit, and pledge instructions. Okay, and especially the reason why one should activate his DDPI is for hassle-free execution, order execution. Okay, and also if you want to place trades in MTF, okay, it is important for you to activate your DDPI segment. Okay, I will come to what is MTF on the later screen. However, the reason why you have to activate your DDPI segment, or for that matter आपको क्यों activate करना चाहिए, is because if you notice, अगर कोई कभी भी आप कोई stock buy करते हो, okay, आपने for example अपने delivery में एक XYZ stock buy कर लिया, and after 5-10 days, or for that matter after months, okay, you want to sell that stock. Okay, जब when you want to sell that stock, क्या होता है, आपको एक CDSL की टी-पिन वो एंटर करनी होती है, एंड एक OTP to authorize to sell the shares, ये एक सबमिट करनी होती है. ओके, अब क्या होता है, बहुत बार ऐसे चीज होती है दैट और ये जो CDSL पिन है, ये आप जब अकाउंट ओपन करते हो, ओके, एट दैट पॉइंट इन टाइम इट इज शेयर्ड टू यू. But when you are new to the world of investing, when you're new to the when you're new to demat account and everything, वो बहुत बार ऐसा होता है कि यू टेंड टू फॉरगेट कि यार वो एग्जैक्टली है क्या, एंड देन क्या होता है, यू जस्ट गो इन योर ईमेल, यू गो टू फाइंड आउट कि यार ओके CDSL पिन कहाँ है, कभी कभी आपको मिलता है, कभी आपको नहीं मिलता है. So to avoid that, okay, it is important for you to activate your DDPI segment. Okay, DDPI. The reason is because अगर आपने एक बार वो एक्टिवेट कर लिया, okay, आपको कोई जरूरत नहीं है CDSL की टी पिन डालने के लिए. So जैसे यहाँ पे मेंशन किया, जैसे आप the benefits of activating the DDPI is unlock buy stocks pay later facility. जैसे मैंने बोला MTF facility एक है, margin trading funding. I'll come in detail for MTF in the later slide. However, it enables you to unlock that. Second is faster order execution. So जैसे मैंने बोला कि you don't have to authorize your T-pin and OTP for every sell trades. So simply आपका अगर DDPI activate होगा, you just click on sell, आपके stocks will get sold at whatever price you sold at. ठीक है. And also cashless trading. So when I say cashless trading, which means कि for example मान लो कि आपके पास एक 1 लाख की होल्डिंग है, ठीक है, 1 लाख के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में है, एंड you find that today the market would be bullish or bearish, whatever, ठीक है, that's your call. अगर आपको लगता है कि चलो मार्केट आज यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, बट आपके पास फंड्स नहीं है, you don't have funds, but yes, you have a strong instinct that okay, yeah, it is the right time to take a position, बहुत सही सही टाइम है. So आप क्या कर सकते हो, that आपके जो existing stock है, okay, you can pledge those stock. Okay, when I say pledge those stock, तो क्या होगा, बेसिकली आपके जो 1 लाख रुपए के स्टॉक्स है एग्जांपल, उसमें से कुछ हेयर कट होने के बाद देयर वुड बी अ सर्टेन अमाउंट, 60-70 फॉर एग्जांपल ले लेते, 60-70,000. ओके, वो अमाउंट आपके लेजर में आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट अमाउंट यू कैन यूज टू प्लेस अ ट्रेड. ओके, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू. सो DDPI एक्टिवेट करने के ये फायदे हैं. Okay, so first is MTF, that's one benefit, very very big and a crucial benefit. Second is faster order execution, and third, as I mentioned, is cashless trading. So cashless trading की facility भी आपको DDPI से मिलती है. So if you have not activated your DDPI, I would request everyone to activate your DDPI today. And the best part is अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको DDPI एक्टिवेट करने के कुछ चार्जेस होते हैं. So there are certain charges जब आप DDPI एक्टिवेट करते हो, but however हमारे पास we do not charge anything for activating your DDPI. ठीक है, आप इंडस्ट्री में जाओगे, there are other brokers who they charge you for this particular thing, but yeah, we do not do that.
So now I'm just showing you a process that how to activate MTF, okay, and how to activate your DDPI for that matter. So अगर आप होम स्क्रीन पे हो, ओके, इफ यू ऑन द होम स्क्रीन, आपको एक सेक्शन यहाँ पे दिखेगा तो अनलॉक DDPI एंड ट्रेड स्टॉक्स विद ईज, ओके। अब जैसे उस पे क्लिक करोगे, it will take you to a next screen that is DDPI, okay, and again it will say you that um, what are the benefits of DDPI as I mentioned earlier, ठीक है। जैसे आप ऑथराइज करोगे, इट विल टेक यू टू ई फॉर्म साइनिंग पेज, जहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड इंसर्ट करना है, आधार कार्ड नंबर इंसर्ट करना है, एंड यू हैव टू सेंड दी ओटीपी। वंस यू सेंड दी ओटीपी एंड वेरीफाई दी ओटीपी, आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ओके, एंड इट विल टेक अप टू 2 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस। सो बेसिकली आपका डीडीपी एक्टिवेट होने के लिए 2 दिन लगेंगे, 2 वर्किंग डेज लगेंगे, ठीक है। So once that is done, after your DDPI is activated, you can simply make trades, hassle-free trades on your account. Okay, it's a very simple process to activate the DDPI. As I told you before, segment activation का process है, derivative segment activation का process है, जितना simple है, उससे ज़्यादा simple ये process भी है। तो जैसे मैंने बोला था कि I would talk more about MTF. Okay, so what is basically MTF? MTF क्या है? It is nothing but it's a kind of a what do you say? In simple terms अगर मैं बोलूँ तो MTF आपकी जो बाइंग पावर है, ठीक है, वो बाइंग पावर बढ़ा देती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको 1 लाख के स्टॉक्स खरीदने हैं, बट आपके पास फॉर दैट मैटर अभी सिर्फ 20,000 रुपए है, ठीक है। But you want to purchase stocks worth rupees 1 lakh because you think that whatever particular stock will, um, will basically become bullish in the future, or for that matter वो ऊपर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 20,000 है, फिर भी आप 1 लाख की पोजीशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमटीएफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपली लिखा है कि इफ यू हैव अ ट्रेडिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख, ठीक है, जो ऊपर के 3 लाख रुपए है वो आपको एचडीएफसी देंगे, ठीक है। So basically HDFC Sky would give you that, okay, and you can buy stocks worth 4 lakh rupees. It is as simple as that, okay. Now since HDFC would be giving the money here, okay, there would be certain clauses to it. One major clause is about the interest, okay, but let me come to that later. सबसे बड़ी बात is that you can hold your positions, okay, up to 275 days. आपने अगर आप आज स्टॉक ले लिया, ठीक है, आपने अगर वो पोजीशन आज ले ली, you can hold it till whatever time you want, that is 275 days for that matter, ठीक है। because क्या होगा, अगर मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा एंड आपने ये व्यू से खरीदा कि वो दैट स्टॉक विल गो अप, ओके, हाउएवर market is not predictable sometimes, but if that stock goes down for that matter, तो क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो नेगेटिव में आ जाएगी। बट ऐसे में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो घबरा जाता है कि यार ओके मेरा पोजीशन अभी लॉस में आ रहा है, सो लेट्स cut it off. However, since we are giving the facility to hold that for a longer period of time, हो सकता है कि वो बाउंस बैक करे and that will help you, ठीक है। So as I said, the holding period is long at 275 days. Enhances your purchasing power. जैसे मैंने बोला कि 4x up to 4x की आपको buying मिल सकती है, okay. So the reason I'm mentioning for up to 4x is because हर stock पे अलग-अलग facility of purchasing power होती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर रिटर्न, जैसे मैंने बोला, अगर मान लो आपने 20,000 का स्टॉक, आपके पास 1 ही लाख रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए के कोई स्टॉक्स खरीदे, मान लेते कि वो स्टॉक जो है वो 10% 10% ऊपर गया, तो आपको जो प्रॉफिट है वो 10,000 का हुआ, 1 लाख पे 10,000। बट सिंस आपने एमटीएफ में पोजीशन ली है, अभी आपने जो स्टॉक खरीदे वो 4 लाख के खरीदे, अब 4 लाख का 10% हो गया 40,000। सो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली 10 से 40,000 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने एमटीएफ लेवरेज किया है यहाँ पे। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एमटीएफ कि आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग हायर रिटर्न्स
increases. ठीक है. Next is flexibility of repayment. अब यहाँ पे to coming to the point of flexibility of repayment, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला था earlier कि हम 12% per annum, this is our interest rate for stocks which are purchased in MTF. ठीक है. अगर 12% पर annum, that is 1% per month. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी जैसे ये ऊपर का एग्जांपल है, 3 लाख के जो 3 लाख वर्थ रुपीस आपने जो स्टॉक्स खरीदे, मतलब एडिशनल जो लेवरेज लिया है, अब 3 लाख का जो 1% बनता है दैट विल बिकम 3,000 रुपीज. ठीक है. 3,000 रुपीज दैट इज पर मंथ, दैट वुड बी द इंटरेस्ट which you will be paying, for the stocks purchased. Okay. So 3,000 रुपीज पर मंथ. सो अगर आप डेली अगर उसको देखोगे तो दैट कम अप्रोक्सीमेटली टू 30 रुपीज. तो दिन का जो आपका है इंटरेस्ट दैट वुड बी 30 रुपीज. ओके, मान के चलते हैं. सो बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज लो. सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप 30 रुपए पर डे पे आपने 4 लाख वर्थ रुपए स्टॉक्स खरीद लिए. ठीक है. एंड मान लेते हैं कि 10% आपने मान लेते हैं कि अपने 10% टारगेट आपने अचीव कर लिया इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. ठीक है. 3 महीने के लिए आपने इंटरेस्ट कितना पे किया? 3%. ओके. 10% में से 3% माइनस हो गया 7%. तो इवेंचुअली आपने ओके 1% आपने एज एन इंटरेस्ट दे दिया, पर आपने 7% भी आपने कमा लिया. ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द एमटीएफ फैसिलिटी. नॉमिनल डिलेड पेमेंट चार्जेस है यहाँ पे. इफ द पेमेंट इज डिलेड और समथिंग, तो 1% पर मंथ इज द चार्जेस. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट. मैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट पॉइंट पे थोड़ा एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि हम जैसे बोल रहे हैं कि 1% पर मंथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे. नो. आपने पोजीशन आज ली, आपने वो 15 दिन के लिए होल्ड की, तो हम आपको इंटरेस्ट सिर्फ 15 दिन का चार्ज करेंगे. आपने 20 दिन के लिए होल्ड की, तो हम सिर्फ आपको 20 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करें. ये नहीं कि हम आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. नो. It will be only about 15 days का interest that you will be paying to us. Okay. So next I will walk you through the entire app here. Okay. The reason for doing this is because it will help you to understand कि ये app exactly दिखता कैसे है. See? So just give me one moment. I'm just sharing my screen. Okay. So yes, this is the app, HDFC Sky app. Login is simple. First of all, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डाउनलोड दी ऐप. आपको रिक्वेस्ट करूंगा ऐप डाउनलोड करो. सिंपली गो टू द प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे यू कैन गो एंड टाइप HDFC Sky. सबसे पहले पेज पे आपको HDFC Sky दिखेगा. You simply click on install and download the app. The reason I'm telling you to download the app is because it is very important, for understanding ki, how the app works, or for that matter जो भी आप ट्रेड्स प्ले कर, आपका order execution and everything is very fast, and there are a lot of things on the app which is very easy and convenient for every investor or every trader. So if you don't have the app, I would request you to download the app. Okay. So जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करते हैं. आई विल जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू. आपको ये हैमबर्गर दिख रहा है. इफ यू क्लिक ऑन द हैमबर्गर, इफ यू गो ऑन द प्रोफाइल सेटिंग्स हियर, ओके, यहाँ पे you will be asked to activate your segment. जैसे अभी मेरा सेगमेंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है.
इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश कमोडिटी करेंसी डेरिवेटिव। ओके, अगर आपका सेगमेंट एक्टिवेटेड नहीं है, so here it will ask you to activate the derivative, and obviously the process which I showed you earlier, simple, verify via bank OTP in less than 2-3 minutes. It will get verified, your request will be accepted. It will take 24 to 48 hours for the segment to get activated, and then yes, after once it is activated, you can start trading in commodity, currency, and derivatives as well. Okay, that's very simple. Also here you have something called as security settings. अब यहाँ पे आप अगर security settings पे जाओगे, so um, you know you can set your preferences. आप biometric on off कर सकते हो, आप insta login instant login on off कर सकते हो. Okay, here it is very simple. It depends on the person to person. If you want to, you can do that. Okay. The next step, as I told you, also to activate your DDPI. Now, as I told you, on the first page, home screen itself, you see unlock DDPI and trade stocks with ease. Enable now. Just 3 easy steps to apply. यहाँ पे आप क्लिक करोगे, authorize now. Authorize now के बाद आपको it will take you to this page. You do the sign now. Okay. यहाँ पे you enter your Aadhaar card number, send the OTP, verify the OTP, and voila, your request for activating the DDPI would be accepted. Okay. It's very simple. Back. All right. Now, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ट्रेड प्लेस करना है तो सबसे पहले आपको फंड्स ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, विदाउट एडिंग एनी फंड्स यू वोंट बी एबल टू प्लेस द ट्रेड. सो फंड ऐड करने के लिए देयर आर टू ऑप्शंस. अगर आप होम स्क्रीन पे हो, इफ यू स्क्रॉल डाउन, जो हमने अभी बात की थी डीडीपीआई अनलॉक करने का जो सेगमेंट है, उसके नीचे ही यू गेट एन ऑप्शन ऑफ ऐड INR. दिस इज सिंपल. यहाँ पे आप डालो ऐड मनी. Add money के बाद whatever account is linked, okay, you simply click on that. Google Pay, add funds. ये डायरेक्टली आपको Google Pay पे लेके जाएगा. Okay. All right. So it will take you to that, and directly you can add your funds. यहाँ पे simply आप Google Pay, Paytm, जो भी है UPI आप यूज कर सकते हो. अप टू मैक्स लिमिट इज 2 लाख, तो 2 लाख तक आप उसको उतने फंड्स आप ऐड कर सकते हो. इफ नॉट, यू कैन ऐड वाया नेट बैंकिंग एज वेल. ओके, यहाँ पे नेट बैंकिंग पे आपने क्लिक किया, प्रोसेसिंग पेमेंट. ठीक है, यू पुट योर डिटेल्स एंड यू विल बी एबल टू ऐड योर फंड्स सक्सेसफुली. दिस इज वन ऑप्शन. जहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको ऑप्शन है, यू कैन ऐड योर फंड्स. द अदर ऑप्शन इज ऑन द हैमबर्गर. इफ यू क्लिक ऑन हैमबर्गर, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको आता है ऐड फंड्स. So click on add funds. Same, it will take you the same page. Add funds again. Select your payment method. Click on that, and yes, you can add your funds successfully. Coming back to the home screen. अगर आप home screen पे देखोगे, so you will get a lot of options here. Okay, first of all, अगर आप कोई holding है, you'll be able to see your holding here. Okay, if you want to check Nifty Bank Nifty charts, okay, simply click on Nifty. आपको यहाँ पे चार्ट दिखेंगे. ओके, ये निफ्टी कैश कैसे परफॉर्म कर रहा है. यू वांट टू चेक फ्यूचर्स, you will be able to see कि नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर, जैन फ्यूचर्स, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑप्शंस में इफ यू क्लिक, सो आपको निफ्टी 50 के ऑप्शन दिखेंगे, टॉप 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी करंटली चल रहा है. इफ यू क्लिक ऑन ऑप्शन चेन, आपको डायरेक्टली निफ्टी 50 ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी. सो
आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड पे पुट ऑप्शन है. यू हैव द स्ट्राइक प्राइस हियर. ओके, सो सिंपली अगर मान लो योर you want to make an a trade, you want to take a call in 23,650. ठीक है, if you want to take a call in 24,200 strike price, आप सिंपली इस पे क्लिक करो, कॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, it will ask you to buy. Since it is nifty तो उसका buy quantity 25 होगा, that is by default, lot size उतना ही होगा. If you want to increase you can do it, and you can review buy order and place the trade here. तो यहाँ जैसे निफ्टी फिफ्टी का सेक्शन है वैसे बैंक निफ्टी का भी सेक्शन है. आपको इंडियन स्टॉक्स एक्सप्लोर करना है, यू कैन डू दैट. एमटीएफ होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, अगर if there is something, automatically here it will be popped up. The best part about this homepage is you will get a lot of options. अगर recent IPO है, जैसे we have two recent big IPO, that one is Swiggy, तो you will जो भी recent IPO Swiggy है, simply click here, one click, one lot or whatever lot you want, proceed to pay, and yes, your bid will be submitted. Simply you have Niva Bupa, ये भी एक one click IPO option है यहाँ पे. You simply click here, it will ask you place your order. Another part is the research section. तो यहाँ पे you have research section, whatever calls. So everyday basis पे you get calls, that is technical, fundamental and trading calls. ठीक है. हमारा जो research है, okay, we have more than 20 years plus experience in the research segment. Okay, and it's a very known research in the industry that HDFC Securities offers. So yes, definitely you can check out our research page. यहाँ पे latest जो भी research होंगे, that are backed by our research experts would be given here. आप simply कोई भी research पे if you want to, so like for example this research 8 November which was given on at 11:02. Okay, click on buy. So it is asking, so यहाँ पे it is mentioned that you can expect returns up to 12%, 12.5%. See, if you click here, so the recommended price is 199 to 206. Currently, it is trading in 205, which means that it is under the recommended price. Okay, the target is 224, stop loss is 195. Okay, and you can hold this. So basically, it is initiated today, and you can hold it till 3rd Feb 2025. That is what is mentioned. This is a technical pick. Okay, simply click on buy. So all the details are mentioned here. Okay, stock details पे अगर आप click करोगे, so here if you click on see more, stock details पे अगर click करोगे, so you will come to see all the details of the stock के उसके analysis, उसके बारे में, वो स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज़ है, कुछ इवेंट्स है, everything you'll be able to see here. Okay, so you can explore our research section. Okay, if you are new to the market, if you are new to investing and trading, definitely you can leverage our research section and research ideas which are given here. Okay, next is pay later, MTF pay later. So it talks about, if you want to know more, you can please watch the video. It will talk about MTF, what it is. So currently we have Moneyfest which is going on. Okay, that is, I will talk more about Moneyfest later. You have option trading. अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, you simply click on option trading. यहाँ पे you get Nifty 50, option chain, Bank Nifty, and Fin Nifty, other chains as well. Okay, simply you can create your own strategy, or you can check out the chains here.
Simply click here, add to basket, and place your order. अगेन यू हैव अ मार्केट मूवर्स सेक्शन. यहाँ पे आपको पता चलता है कि टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है. ओके, 52 वीक हाई लो, उसके बारे में यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर इंडियन मार्केट्स. ओके, we also have the news section on the app home page पे आपको news section है. Okay, you can simply explore all the news. If you click on watch list, यहाँ पे watch list you can add. For example, अगर कोई आपको stock add करना है, you just click on add to watch list. Type Tata Motors example. Okay, so here you see the icon. You click here and yes, go back. You have Tata Motors in your watch list. So if there is any stock in your mind, you want to track that stock, simply you can add it to your watch list. Okay, so that becomes easier for tracking. Right. Here, if you click on the third icon, wherein this is the explore section. The explore section में you can you can explore Indian stocks, that is explore the stocks. आपको म्यूचुअल फंड अगर एक्सप्लोर करना तो you can simply click on mutual funds. यहाँ पे you will first see what are the recommended picks which are given by our research. So you can simply click there. All right, and अगेन यहाँ पे आपको टॉप रेटेड हायर रिटर्न्स वाले मार्केट मूवर्स म्यूचुअल फंड भी बताएंगे कि इसके लास्ट 3 ईयर कैगर इसका 25.1% है, और फर्दर में 3 ईयर रिटर्न्स इसका 25.1% है फॉर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड. ओके, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स यू कैन ट्रैक हियर. We have over 4,000 plus mutual funds, on HDFC Sky. So simply, if you're new to the market, you can start your investment journey through mutual funds as well. Okay. This is the portfolio section. अब जैसे for example, if you're holding anything, अगर आपकी कोई holdings है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि what is the net worth. Example, कि अपनी net worth 1 lakh rupees है, and if it is grown or if it is fallen, by how much percent, it will be mentioned here. सेकेंड इज पोजीशंस. आपने कोई भी पोजीशन ली हो कोई स्टॉक में, सो ऑटोमेटिकली दैट पोजीशन विल अपीयर हियर. ठीक है. थर्ड इज एमटीएफ. अगर आपने कोई एमटीएफ में पोजीशन ली हुई है, सो इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर हियर. ठीक है, तो आपके जो पोजीशंस है, सो इट विल बेसिकली अपीयर हियर. ओके, नाउ कमिंग टू ऑर्डर सेक्शन, द लास्ट सेक्शन. सो यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हो, normal order, GTT order, SIP order, part order. So automatically here it will be shown. जैसे अगर कोई normal order मान लिया मैंने Indian stocks में या mutual funds में, तो automatically it will be shown here. ठीक है. So we have a best feature which is called as cart. Create new cart पे अगर आप click करोगे, cart name. Now add stocks. Reliance. Just a moment.
बेसिकली व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज कि आप सिंपली यहाँ पे यू नो अभी ओके कार्ड, अब यहाँ पे यू जस्ट सिंपली ऐड योर कार्ड, और यहाँ से इफ यू ऐड योर स्टॉक्स हियर, ओके, यू कैन एग्जीक्यूट दोज। मान लो आपने 5 स्टॉक्स कार्ट में ऐड कर लिए, जैसे आप वॉच लिस्ट में ट्रैक करने के लिए करते हो, ये बेसिकली आपने स्टॉक्स ऐड कर लिए 5, और एक ही साथ आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपली ऑन वन क्लिक आपके पांचों के पांचों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स कम टू हाउ टू प्लेस और ऑर्डर वाला सेक्शन। बेसिकली टू टेल यू कि आप कैसे कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक स्टॉक टाटा मोटर्स, ठीक है, आपने टाटा मोटर्स क्लिक किया, सी स्टॉक डिटेल्स पे गए, ठीक है, तो टाटा मोटर्स क्लिक किया आपने, सी स्टॉक डिटेल्स पे गए। सबसे पहले अगर आपको कैश में ट्रेड प्लेस करना तो आप इधर पे से ऊपर सेलेक्ट करोगे कैश, ठीक है। अगर फ्यूचर्स में प्लेस करना तो आप फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे तो आपको टाटा मोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। सिमिलरली आप ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको टॉप 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे फॉर टाटा मोटर्स विच इज अ रीसेंट वन, ठीक है। जैसे सो अगर आप पूरी चेन देखोगे, सी ऑप्शन चेन, तो उसके सारे टाटा मोटर्स के जितने भी ऑप्शन चेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे आपको दिखेंगे। सबसे पहले कैश पे आते हैं। अभी मान लो मेरे को ये स्टॉक बाय करना है, सो अब मैं कैसे करूंगा बाय, मैं इस पे बाय पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि द स्टॉक इज लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी, सो प्राइस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। सो आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको एनएससी में ट्रेड प्लेस करना है, बीएससी में प्लेस करना। यहाँ पे यू ऐड योर क्वांटिटी, आपको एक क्वांटिटी ऐड करना है, 100 करना है, 10 करना है, 1000 करना है, जितना भी आपको करना है आप यू कैन सिंपली ऐड हियर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आती है तीन, प्रोडक्ट टाइप में 3 ऑप्शन है, वन इज इंट्राडे, डिलीवरी एंड थर्ड इज एमटीएफ। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि व्हाट इज डिलीवरी, डिलीवरी इज नथिंग बट कि आपने कोई स्टॉक खरीदा एंड यू होल्ड दैट स्टॉक फॉर मोर देन 1 डे, ठीक है, दैट इज डिलीवरी, ओके। सो मान लो मैंने टाटा मोटर्स के 10 शेयर मुझे खरीदने हैं, ठीक है, तो मैंने अभी रिव्यू ऑर्डर करके बाय कर लिया एंड, ठीक है, इफ आई होल्ड दैट फॉर मोर देन 1 डे इट विल बिकम अ डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है। व्हाट इज इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करोगे तो इंट्राडे में अगर आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक सुबह खरीदे हैं, दैट इज ये प्राइस पे खरीदे, तो it is important for you to square off your position before 3:15, okay, um, in during the market hours if your order is in intraday। अगर आपका आपका ट्रेड अगर स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ then yes it will be auto square off, फिर आपको पेनल्टीज एंड चार्ज लगेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग इज नथिंग बट आपको सेम डे स्टॉक बाय करके सेम डे आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज एमटीएफ ट्रेडिंग। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एमटीएफ ट्रेडिंग में आपको क्या होगा, इफ यू क्लिक ऑन एमटीएफ, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये बटन टिक हो जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्टॉक बाय करने हैं फॉर टाटा मोटर्स विच इज ट्रेडिंग ऑन 805 रुपए, ठीक है। अब 10 स्टॉक के में मेरी प्राइजेस, अगर 10 स्टॉक मेरे को खरीदने हैं तो मुझे लगेगा अगर मैं डिलीवरी में खरीदूं, ठीक है, ठीक है, ओके, तो अगर मैं डिलीवरी में खरीदूं टाटा मोटर्स के 10 स्टॉक तो मुझे 8,005, दैट इज 8,000 रुपीज, 8.5 के मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, उतने मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ओके, टू बाय 10 स्टॉक्स ऑफ टाटा मोटर्स एज ऑफ नाउ, ओके। हाउएवर अगर मैं इसको एमटीएफ में बाय करूं तो आप देखोगे कि मुझे सिर्फ 2,816 रुपए देना है, ठीक है। अगर मैं 2,816 रुपए दूंगा तो मुझे 10 स्टॉक एमटीएफ के आ जाएंगे, सो 10 स्टॉक टाटा मोटर्स के आ जाएंगे विद इन एमटीएफ पोजीशन, ठीक है। राइट, सो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे यू क्लिक वन बटन क्लिक पे आपको पता चलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ ऑर्डर कि आप इंट्राडे में, डिलीवरी में, एमटीएफ में प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल एमकेटी, एमकेटी इज नथिंग बट मार्केट ऑर्डर।
मार्केट ऑर्डर मतलब ये जो ऊपर प्राइस दिख रही है आपको, टाटा मोटर्स लिखा है 804.40, ओके। आप अगर मार्केट पे क्लिक करोगे देन दैट ऑर्डर विल गेट प्लेस्ड ऑन वट एवर करंट मार्केट प्राइस इज। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। सेकंड इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इज नथिंग बट कि आप एक लिमिट सेट करोगे कि भैया ये जो ऑर्डर है, ये एक्स वाई, ये जो प्राइस है, ये प्राइस एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ट्रिगर हो जाएगी, देन ओनली दी ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड, वरना दी ऑर्डर वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर ये मैं चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स जब 802 रुपये आए, ठीक है, तब ये ऑर्डर ट्रिगर हो। तो मैं यहाँ पे 802 रुपया करूंगा और मैं रिव्यू ऑर्डर करके बाय करूंगा। तो जब भी ये ऑर्डर, जो भी करंटली 804 रुपये पे चल रहा है टाटा मोटर, जब भी ये 802 रुपये पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑर्डर। थर्ड इज स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज नथिंग बट कि जैसे ऑर्डर एक्टिवेट्स एट दिस प्राइस। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दी, तो सिंपली आप एक स्टॉप लॉस डाल सकते हो कि आपको पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर ट्रिगर प्राइस के नीचे या ऊपर अगर ये स्टॉक गया तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। सो दैट इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज नथिंग बट सिमिलरली, जैसे आप जो मार्केट प्राइस के नीचे अगर आप एक्स वाई जेड आपका स्टॉक गिरा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो दैट इज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ठीक है। सो सिंपली जैसे जैसे आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया, रिव्यू एंड बाय किया, आपको इट विल कम अ स्क्रीन की ओके आपको ये ऑर्डर बाय करना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। प्लेस बाय ऑर्डर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर पंच इन हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल। आप कोई भी स्टॉक में जाके आप यू कैन डू दैट, ऑलराइट। एंड इफ यू सी ऑन द टॉप एंड साइड, ठीक है, यू ऑल्सो हैव एन ऑर्डर ऑफ एस आई पी ऑर्डर। अगर बाई पे अगर आप क्लिक करते हो एस आई पी करोगे तो दिस इज नथिंग बट ए स्टॉक एस आई पी, ठीक है। स्टॉक एस आई पी मतलब कि आप एक अग्री करते हो कि आप पर्टिकुलर अमाउंट डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, कभी भी आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो और अमाउंट सिलेक्ट करते हो, और आपको कब 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 वो ऑर्डर प्लेस करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यू शुड बाय टाटा मोटर्स के शेयर्स एवरी वीकली आपको, तो आपका एक क्वांटिटी का 800 रुपए का जो वीकली एस आई पी है, स्टॉक एस आई पी है, वो आपकी कटेगी। यू जस्ट बेसिकली कम ईयर, आपको डे सिलेक्ट करना है कि आपको कब वो एस आई पी कटनी चाहिए, कब वो एस आई पी कटनी चाहिए। आप रिव्यू एस आई पी ऑर्डर करोगे, सिलेक्ट मंडे 9:30 कब करनी है, ठीक है। रिव्यू एस आई पी ऑर्डर करोगे तो ये इट विल टेल यू कि एक क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पे, प्रोडक्ट टाइप इज डिलीवरी, फ्रीक्वेंसी इज वीकली, ठीक है, एंड स्टार्ट्स ऑन कमिंग मंडे एट 9:30 am। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आने वाले मंडे से जो भी मार्केट प्राइस होगी ऑफ टाटा मोटर्स, उस वक्त पे डिलीवरी ऑर्डर मेरे एंड पे एग्जीक्यूट होगी एवरी वीक मंडे। तो हर मंडे आपकी स्टॉक एसआईपी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो बेसिकली स्टॉक एसआईपी हेल्प्स यू इन बीइंग डिसिप्लिन इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। आपको अगर टाइम नहीं है टू बार बार ट्रैक द स्टॉक, यू कैन सिंपली स्टार्ट एन एसआईपी। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करते हो, यू कैन स्टार्ट द स्टॉक एसआईपी इन you can start an SIP in stocks as well. ठीक है? Also, I would like to inform you, here you have an option। जैसे नीचे आप ये सेल के ऊपर आप देखोगे, you have start SIP, create GTD and add to cart, ठीक है। create GTD आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डर है गुड टिल ट्रिगर्ड, ठीक है। जीटीटी इज नथिंग बट गुड टिल ट्रिगर। तो आप एक जीटीटी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, ओके। सिंपल है, रिव्यू ऑर्डर एंड इट विल गेट executed. Good till triggered is nothing but a limit order.
So it is very simple to place an order on HDFC Sky. Okay. If you click on the hamburger again, यहाँ पे basic reports. If you want to explore the basic report, जैसे back office पे अगर click करोगे तो पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स, जैसे आपको टैक्सेशन पर्पस के लिए जो काम आएगी उसके सारे रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की सारे रिपोर्ट्स यू विल बी एबल टू गेट हियर। तो सिंपली आप वन क्लिक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। This is more or less about the app. Uh, as I earlier requested, if you don't have the app, request you to download the app and explore it more. The more you explore the app, the more you will be used to the features, and your investment and trading journey will be smooth and efficient. So जैसे मैंने पहले कहा था कि HDFC research is very known in the market. We have more than 20 plus experience in our research segment. So here are some performances, ठीक है, जो हमने research calls दिए in the past. Okay, उसके performances है। तो if you see, अगर हमने index futures में अगर कोई call दिया 299 calls में से 211 calls वो positive. Success ratio, basically हमारा success ratio was 70% in these calls. ठीक है। 1.5% average return was given, basically जैसे आपको पता है futures and options में you don't hold the position for a longer period of time, so 8% का return is very good to be considered as very good in in the index futures. Index option में अगर आप देखोगे the success ratio is close to 60%, and 7.8% का return is on an average return which is given. Stock futures में the return is very good. Stock futures में 5%, stock options में is 6.4%. ठीक है। Cash trading, that is 0 to 10 days वाले calls में you have 83% of success ratio and on an average return of 2 days. और अगर आप if you look at this, कितने कम time में you are getting this return. For example, अभी हमने let's take an example here only. कैश ट्रेडिंग वाले जो भी कॉल्स हैं 455 में से 378 है, सक्सेस रेशियो इज 83%. सो एवरेज रिटर्न आपको 2% मिल गया। और एवरेज ट्रेडिंग डेज, बेसिकली आपको कितने दिन में 2% का फायदा हो गया, दैट इज एवरेज 2 दिन में। एवरेज 2 दिन में आपको फायदा हो गया। सो बेसिकली हमारा जो रिसर्च है इट्स बैक्ड, एंड इट्स बैक्ड बाय रिपोर्ट एज वेल। हमारे जो भी रिसर्च कॉल्स रहते हैं, वी हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट that why we think that this particular stock is good for investment, and all those details are there available, which is shared. Also, if you see your the success ratio for ETFs जो भी exchange trading, this is new. Okay, we certainly, I'll talk more about the Diwali picks on the next slide as well. Okay, so this is a technical performance. Okay, if you look, average return is 16% in future options. 74% strike rate is a very impressive and a good strike rate. Stock option, stock futures, may have a strike rate of 83%, 80%. So yes, and if you look at the average return, 16%, 13%, it's a very good return. What we can expect, and number of days. Check out here. So yes, I would request you all to explore our research section. Okay. We also keep on sending our customers, the latest research which is there available. So that is the reason I requested. You will find that on the app. You will get that via WhatsApp, via email, via SMS. So yes, you can definitely utilize it and leverage it for your investment journey. Next, I would like to talk about Money Fest. Okay, Money Fest festival is Diwali festival which we had started. Okay,
And there are some recommendations which were given in manifest. Okay, basically, manifest was all about making your money matter and making your investments matter. So HDFC Sky started this. Um, if you see, we had stock picks for summer 2081. Okay, this was some stocks which were recommended. Okay, for investment purposes. You can find it on the app as well. As I was earlier showing you on the app, you have a tab called Manifest. If you click on the Manifest tab, you will be able to see all the stocks. Okay. These are the stock SIP recommendations. So stock SIP में अगर आपको कोई recommendation, आपको कोई investment करनी है, so these are some certain recommendations which are given by the research team. Okay, you can simply avail this. These are some stock SIP recommendation. ये जो trade LTP है, it is as of 1st October. Obviously, it must have changed. So you can check these stocks and definitely leverage. Also, we have ETF recommendations which were given. So, as I earlier said, ETFs on HDFC Sky is free. Okay, there is no brokerage charge on ETFs. Okay, so ETF पे कोई brokerage charge नहीं होता. It is just that whatever ETFs you purchase, you have to pay for that because it will get in your demat account. But yes, these are some ETF recommendations which were given. That's it. Thank you so much for attending this session. I hope this will help you, to start your investment journey. And if you have any questions, the Q&A section is open. You can please let us know your questions. We will be more than happy to answer that. The Q&A is open. So if you have any questions, you can please let us know your questions regarding anything about HDFC Sky. We had one question in the chat earlier from, okay, we had a question regarding the funds. Will it be added in to an wallet? Okay, will it be added to a wallet? Okay, so first of all, I would like to tell you that there is no wallet or something linked. Okay, it will get added to your demat account only. Okay, whatever. So HDFC Sky के account में आपका पैसा add होगा from whatever means you're adding that money. So there is no external or third party wallet. It gets added in your demat account. वहाँ से you can make the trade.
All right. Thank you so much for your participation, and I hope this was a very informational